I hope all of you have revised this. Yes or no, please tell me. सब रिवाइज करके आए हाँ या ना? लिखा रहिए, पता चल जाएगा. राइट अ क्वेश्चन. Rewrite the products for the following, and then there is one problem that I am going to do. You guys don't need to do this one. एक और कर लीजिएगा आपको. I mean 4 and 5 I am going to do. ठीक है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है. Can you just scroll up? I have not written anything. Sir, ozone analysis. कुछ नहीं लिखा है. I didn't write ozone analysis. Sorry. I did not write ozone analysis. So what should I do, Chavez? Ozonolysis was done in the last class only, na? हाँ guys. Yes, sir. Madiha, Shahid. I was disconnected. So you have to watch the recording, right, Chavez? Recordings are available, na? No, sir. Like I'll take screenshot if you scroll up. आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी लोगों को करने दीजिए आप. तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, ये सही चीज नहीं है ना. रिकॉर्डिंग्स ले लीजिए आप. यू कैन आस्क लर्निंग फॉर दी नोट्स आल्सो. ओके, आप बस बैच बता दीजिए, डेट बता दीजिएगा, लर्निंग आपको नोट्स भी भेज देंगे. ठीक है शावेज? क्लास में ऐसे ही बहुत टाइम कम रहता है ना. But so when everyone, if they have written the question, then I can go back. Okay, Chavez, just थोड़ा सा रुक जाइए आप.
Okay, all of you wrote the question ना? शामिज आप थोड़ा सा ना कंसिडर कीजिएगा दूसरों का टाइम भी, है ना? अगर आपने नहीं लिखा है तो आपको खुद से एफर्ट लगा के हमसे आप मांग लेते स्क्रीनशॉट क्लास से पहले, है ना? ट्राई कीजिए क्लास में ये सारी चीजें ना हो, ठीक है शामिज? Yes, sir. You took a screenshot? Take a screenshot. Done? Done guys? हाँ, शामिज? Yes, sir. Done, sir. Okay. Give me a second. Some people have sent the answer. See, guys, I told fourth and fifth one I will do, okay? First one is fine, second one is fine, third one is fine, fourth and fifth one I will do. Tarif, first one correct, second one correct, third one is also correct, very good. Others, please send your answers. First one, second one, fine. Third one is also fine. Yeah, correct. See you guys. Those who have not done till now, please see. Here you will be having CH2 double bond O and CH2 double bond O, right? Basically, what do we do here? We break this double bond, give oxygen here, give oxygen here. So when we have CH2 double bond oxygen, so, or this is what? Carbon with two hydrogens and double bond O. That is basically HCHO, okay? So whenever you have CH2 with a double bond, it will be always HCHO, okay, formaldehyde. So again, you see what CH2, so this will be obviously HCHO, and this remaining portion is also going to be CH3CHO, plus you will get CH3CHO. Now wherever you have CH, it will be CHO. So this fragment will be CH3 as it is, and CHO will be CHO. Here also you will get CH3 and then CHO. So we have written already, so I'm not going to write it once again. Now in this case, please see what is going to happen when you have cyclic alkenes. Then in this case also you will break the double bond like this. You'll give the oxygen here, you will give the oxygen here. So when you break the double bond, then what is going to happen?
From cyclic, it will become acyclic. From cyclic, it will become acyclic. And here you will count the numbers 1, 2, 3, 4, and 5. So this is going to be a 5-carbon chain. So 1, 2, 3, 4, and 5. Now first carbon and the fifth carbon. So they are going to be now what? They are going to be now CHO. Because it is getting, so here you are going to get double bond O, and here also you are going to get double bond O. So what will be the other bond? Hydrogen, obviously, right? Now in this case also you are going to do the same thing. See, these are a bit complicated cases, but you don't have to worry about them. So what was here? Here we actually had CH2, right? We have not shown it, but we had CH2 here, carbon with 2 hydrogens. So CH2, both the CH2, it will become HCHO plus. Here what we will be getting, this carbon atom, it is having only one carbon atom attached. This carbon also is having only one carbon atom attached. So it will become CHO like this. We'll have double bond O, and here you will have hydrogen. Here also you will have hydrogen. Okay, so please write this down. These are complicated cases, huh? But basically you will be getting most of the time these questions. CH2, CH2, CH3, CH2, or else, I mean, even if you are going to get a bit difficult, it will be something like this. So this carbon, it does not have any hydrogen, so it will be ketone, C double bond O. And once you break oxygen and oxygen here, so this is having one hydrogen, so it will be CH3, CHO. Okay, so not much difficult problems here. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Sir, can you explain the fifth structure? Sorry, is someone saying something? I can't. Wait a second. Wait a second. Sir, can you explain the fifth structure? Wait. One second. I can't hear you, guys. Wait a second. Let me get my earphone. Tell me, Tarif. Sir, can you explain the fifth structure? Fifth one. Okay. Yes, sir. As I said, we will draw it like that only. Okay. So wherever we have double bond, we will break it, give this one oxygen and give this one oxygen. We will break it, give this one oxygen and this one oxygen. Okay. So from this fragment, from here to here, I will get CH2, double bond oxygen. Is this clear, Tariq? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Now, between this middle structure, what we are going to get, I will write it like this. Double bond O and double bond O, correct? Yes. Fine, na? So what is this? This is actually, I mean, the other bond, carbon will have 4 bonds, right? So the fourth bond will be with hydrogen because hydrogens are not shown. Plus we will get again what? This is CH2 double bond O. So rather than writing 2 times CH2 double bond O, you can only write one time. Yeah? We have written one time. That's the difference, nothing else. Got it? Yes, sir. Got it. By the way, can all of you guys please go to your Learnivio app? Okay. Kiran, can you please go to your Learnivio? कि एक आदमी भी जाए तो कोई गया है Learnivio app में अभी तक? Please tell me. जो जल्दी आ सकता है. Kiran, जाइएगा please Learnivio app में. Just let me know once you are there, Kiran. Okay. Yes, I'm there. Okay. Now tell me what are the assignments. You go to chemistry first of all. Yes. This is chemistry. So good. Can you see aldehyde ketone carboxylic acid कोई ऐसा section है? Yes, sir. Is there? Can you go to the aldehyde ketone carboxylic acid? Yep. Can you tell me the first topic that is there? Preparation of carbonyl compounds. Yes, preparation of carbonyl compound. Second one is Then also the you have two preparation of
Yes. दो है वहां पे, राइट? दोनों हो चुका है? Expired बताया. सॉरी, Expired बताया. एक्सपायर बता रहा है, मतलब आपने दिया नहीं है लेकिन हो चुका है, राइट? रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट नहीं आ रहा है ना? नहीं. आपको रिपोर्ट नहीं आ रहा। शाहिद आप जाइए, यानी कि आपने दोनों नहीं दिया टेस्ट। शाहिद, कैन यू गो टू द लर्निंग ऐप, go to chemistry, I mean assessment and then chemistry। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में जाइएगा तो मिलेगा आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। कैन यू tap on that? Okay. Now tell me what you see, preparation of carbonyl compounds 1, preparation of carbonyl compounds 2. Can you see that? Okay. Do you see report or you see expired or something like that? A report. In both of them? Yes, sir. It's like expired. Expired or report? Can you send a screenshot? Expired या report, क्या Expired. बोल रहे हो? Expired, both of Yes. them. So, बताइए। so मेरी भी रिपोर्ट आ रही है. It's written expired but रिपोर्ट भी आ रही है. Attempted. अच्छा, रिपोर्ट आ रहा है? हाँ ठीक है, एक्सपायर लेकिन रिपोर्ट आ रहा है ना आपके में, दोनों में? Yes. हाँ ठीक है, ठीक है, यानी ये दोनों हो चुके हैं। ठीक है, फाइन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक, बट चलिए देखते हैं, अगर कंप्लीट हुआ तो फिर आप लोग दीजिएगा असेसमेंट। दिस टॉपिक इज बिट लेंथी, शायद मैं पूछा। हाँ ठीक, तो रिपोर्ट तो आ रहा है आपको शायद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जस्ट अ सेकंड। Your answers are also fine. I just saw your answers, Shaviz. आपके आंसर सही हैं, ठीक है? Okay, fine. So let us start now. See, all the method of preparation are done. We are now going to look at what? Chemical properties. ठीक है? Chemical क्या, उससे पहले physical properties देखते हैं। Physical के बाद हम लोग chemical देखते हैं। Physical properties का assessment है नहीं कुछ खास, ठीक है? चलिए, right next, physical properties. Number 1, please write quickly, right? Okay. Aldehydes and ketones are miscible salt, or miscible in water as the oxygen of aldehyde and ketone and form hydrogen bond with H2O. Okay, so how? You see, if I have a water molecule, it will be having hydrogen, oxygen, and then hydrogen. This will be delta negative and this will be delta positive. If I have my carbonyl compound, it will be having carbon, some 2 bonds here, double bond oxygen. So this oxygen atom will have the lone pair electrons. So these lone pair electrons will interact with the hydrogen, right? So this is hydrogen bond. Okay. Next you will write solubility will decrease on increase in carbon chain. Increase in carbon chain length. Why? The same reason as that of alcohol and ether. Here only oxygen atom is responsible for the hydrogen bonding. The carbons are not responsible for the hydrogen bonding. Okay, that is why what's going to happen. If I increase the carbon chain length,
unfavorable part of the molecule is increasing, and unfavorable for solubility. That is why solubility decreases on increase in the carbon chain. Right, next point. Please write these things with me only. Right, next point. Boiling point of aldehyde and ketones are higher than aldehyde and ketones are higher than non-polar hydrocarbons and weakly polar ethers and weakly polar ethers. Next point. Due to absence of hydrogen bond, नहीं नहीं ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना, ऐसा पहले अच्छे से पढ़ो जो। नहीं नहीं due to absence of hydrogen bond, boiling point of aldehyde and ketones, boiling point of aldehyde and ketones is lower than corresponding alcohols. Okay, so alcohols will have higher boiling point. Please write this down. Arrange in increasing order of boiling point. Okay, write the question. First of all, we have CH3CHO. See, guys, they can also give you the names. Okay, so please be prepared for the names. They will give you acetaldehyde. They will give you ethanol, CH3, CH2OH. Next is dimethyl ether, CH3, OCH3. Then you have propane, CH3, CH2, CH3. So first of all, you will classify them on the basis of their polarity. So this is weakly, this is strongly polar because it is aldehyde. This is strongly polar. We have alcohol. So alcohol has hydrogen bond. So it will have hydrogen bond. Ether is weakly polar. Then we have 3 carbon atom. It is completely non-polar. Okay, this is completely non-polar. So if I just compare the strength of their intermolecular forces of attraction and I name it as A, B, C, and D, then obviously B is going to have the highest boiling point, followed by strongly polar A, then weakly polar C, and then non-polar D. Because hydrogen bond is strongest, then we have polarity, high polar, more boiling point. This is weakly polar and this is non-polar. Please write this down. Sir, in this, what does this SP mean? Strongly polar, strongly polar.
All of you done? Yes or no? Please tell me. All of you wrote this down? Yes, sir. Now, right next, chemical properties. Chemical properties. So in chemical properties, first of all, you are going to look at a class of reaction which is known as nucleophilic addition. We have a nucleophilic reagent, and nucleophilic reagent, it attacks on the carbonyl carbon, and then the further reaction happens. So the addition is happening on the carbonyl carbons. A general mechanism is PC. Carbon doubly bonded with oxygen, and since it is doubly bonded with oxygen, this oxygen will have delta negative charge and the carbon will have delta positive charge. Then what will happen? Then the nucleophile will come and it will attack on the carbon atom. It will attack on the carbon atom like this. Why nucleophile is attacking on the carbon atom? Because carbon is delta positive. Nucleophile is going to be electron rich. Electron rich to electron deficient. As soon as it attacks on the carbon atom will say, I already have 4 bonds. So it will break one of the bond like this. Then what is going to happen? The carbon atom will get a new bond with nucleophile, and oxygen atom will be as it is with a negative charge. Then on further addition of hydrogen H+, we will get carbon, the nucleophile as it is, and it will become OH. Got this? Yes or no? Please tell me. This is a general nucleophilic addition reaction. General nucleophilic addition reaction. Okay. Now, the one we are going to learn first of all, it is please write. Number 1, it is addition of ammonia and its derivatives. Ammonia and its derivatives. Please write this down if you know once you're done. Then I'm going to start the reaction. So please write here. Now, when ammonia, we will have ammonia. Now we will see this reaction as with ammonia, and then we will generalize for the ammonia derivative. Please see the mechanism in this case. So when we are going to have a carbonyl carbon, it will be something like this: carbon doubly bonded with oxygen atom. Here you will have NH3. So this ammonia will attack on the carbon atom like this. This pi bond will break. Okay, this pi bond will break. And what we will be getting, PC, we will be getting something like this. The carbon atom, the 2 bond as it is. Here it gets a new bond with nitrogen, which is having 3 hydrogens. Nitrogen, which is having 3 hydrogens, and then a bond with oxygen, which is having now a negative charge. This nitrogen atom will be having a positive charge because it is having how many bonds? It is having 4 bonds. Please don't write anything. Listen, this particular point very important and very important point. All the hydrogen will be delta positive because they're attached with nitrogen atom, which is having a positive charge. Nitrogen atom already it is very electronegative, so it will be pulling the electrons. It will be pulling the electrons. Now, with the positive charge, it will be pulling electrons more effectively, making the hydrogen atoms more electron deficient. So hydrogen atoms are very electron poor, very electron poor, very electron poor, and oxygen atom is in vicinity. So oxygen atom will say, come. It is already having negative charge, so it will ask the hydrogen atom to please come. And then what is going to happen? Please see. As soon as this particular oxygen atom attacks here, what will happen? This hydrogen atom will give its electron pair to the nitrogen atom to neutralize it. So please see the carbon atom, the 2 bond as it is. Here we have nitrogen atom with
2 hydrogens now with 2 hydrogens. Now this oxygen atom is having OH. But this oxygen still has lone pair electron, and the hydrogen atom will be still delta positive because of what? Because of the electronegative, because of the electronegative nitrogen atom. So it will be having delta positive. This will also be having delta positive. Now what is going to happen? Please, this one is very important. Okay, this one is very important. As soon as this particular oxygen atom it attacks on hydrogen, what will happen? This hydrogen will give its bond to nitrogen and carbon. As soon as nitrogen and carbon will get a bond, carbon will say, I already have a bond, so this bond will be broken. Okay, this bond will be broken. And as you can see, what is going to happen? Oxygen is having a hydrogen atom, it gets another hydrogen atom. So minus H2O. H2O will be released, and you will get carbon with the 2 bond as it is, then a carbon double bond nitrogen with the 1 hydrogen. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. This last step is very important. Please see once again. This is the first step that is happening. All of these are happening in a single step. But first of all, there is attack of oxygen to hydrogen. Secondly, hydrogen gives the electron pair to the nitrogen atom. And as soon as carbon gets the 4th bond here, it breaks this bond. So this is happening in the third place. Please write this down. Let me know once you're done. Sir, here, how did nitrogen get positive charge? And because it is having 4 bonds, right? That is why it will get positive charge. You can calculate the formal charge here. It is giving a lone, it is giving with a pair of electron, right? It is sharing. That is why it gets positive charge. Okay. All of you wrote this, yes or no? Please see me. Sir, I read. You're writing. Okay. Done, sir. All of you done, yes or no? Please tell me. Anyone still writing? Please see here, guys. We are going to now generalize this particular ammonia and ammonia derivative. Please see, don't write anything, leave your pen aside. Please see. You will have aldehyde or ketone, anything. So both of them will have carbon double bond oxygen. Plus, ammonia has NH3, its derivative will have NH2 something, So the H2 and nitrogen will be always there, and there will be some group attached, Z. As in this particular case, if you write NH3 in this particular format, please try to understand what I'm saying. Don't be just looking at the screen, try to understand what I'm saying. If I want to write NH3
and think ahead of me. Okay, guys, please think ahead of me what I'm trying to say here. Okay, if I write NH3 in this format, there should be something popping up in your head. How can I write NH3 in this particular format? How many hydrogens? There are 3, so I will write 2 hydrogens here and nitrogen here. So what will be the Z? What is the Z in NH3? What is the Z in NH3, guys? Tell me. Very good. ठीक है ना? ये चीज please on करके रखिए आप लोग hydrogen. So what happens here is this oxygen and hydrogen are leaving as water to make a product carbon doubly bonded with, as it was double bond oxygen, it is double bond nitrogen. See, then the Z. So in ammonia derivative, you have to identify the Z only. There is no other work. You have to identify the Z, double bond N, Z, double bond N, Z, double bond N, Z. Is this clear? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? जल्दी बताएं. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए. इसको लिखिए जल्दी. Write this part. Right, plus H2O and everything, right? But that doesn't matter. No? Don't write H2O. Should you write? So much. I will write the reagent, that is ammonia derivative. You will identify the Z and then write the product. Okay, guys? Sorry. Now, in the reagent number 1, you will write about NH3. NH3, you will write what is the Z and what is the product. What is this? This is ammonia. Second is NH2OH. आपको Z के बारे में सोचना ही नहीं है. Please try to understand. You don't have to worry about Z. You worry about 2 hydrogens. Whatever is given, you write the 2 hydrogens, then the N, and whatever remains is Z. Whatever remains is Z. ठीक है? ये आप लोग प्लीज कुछ मत कीजिएगा. H2 रखिए, बीच में नाइट्रोजन रखिए, and then just identify the Z. Okay. You will write the Z. And what is this? This is hydroxylamine. Write the third one. NH2 bonded to NH2. ठीक है? You will write here, this is hydrazine. Fourth, you will write NH2, NH, we have a benzene ring. This is known as phenyl hydrazine. फिफ्थ में लिखिएगा. फिफ्थ में लिखिए आप लोग क्या लिखिएगा? Phenyl hydrazine. You have now 2,4-dinitrogen. You'll have NH2. Please see my whole structure, then only start writing the structure, okay? Because some structure may be larger in size, which will require more space. So here we have 2,4 dinitrophenyl hydrazine. हम ऐसे टाइप कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है? Sixth लिखिए. Sixth is semi-carbazide. Semi-carbazide is NH2. C double bond O. NH2.
the semi-carbazide. Seventh one is एक छूट गया, एक छूट गया, अमीन छूट गया, RNH2. This is just amine. ठीक है, चलिए एक और चीज, इफ यू हैव डाउट एनीवेयर ना, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे कुछ, please let me know which one should I do for you guys. 1 2 3 4 5 6, let me know what I have to do. I will do that for you guys. ठीक है, बट चलिए एटलीस्ट till 3 you guys can do, I think, है ना? 3 के लिए I am going to give you 3 more We have to minutes. send on WhatsApp. Yes, send on WhatsApp, correct. Once you're done till 3, please let me know, send it to me, okay?
Yes, very good Shavis, very good. ठीक है, आप आगे करते जाइए, इसी तरह करना है, very good. ठीक है, please don't attach Z directly. You have a nitrogen, then the Z. Okay, remember the case of ammonia. Remember the case of ammonia. Okay. Others, please send the answer now till 3 if you are done. Iram, Fahad, all of you guys. मदीहा, आपको समझ में आ रहा है मदीहा? Yes. Okay, so once you are done now, but till 3, till the third one, please send it. Okay. Take 1 more minute. Very good. Correct है. Shahid, very good. Tarif. Yes, Tarif, very good. Correct. Very good. Very good. बहुत सही, बहुत सही. Raba, you are understanding what's happening, yes or no? I see my net is weak, so in between I'm going and coming, so that's why I will listen the recorded lecture later. I didn't got it. You did not get it. Why? Sir, because my net is weak, so in between the net is gone and I have to reach the class. That's why I didn't listen to the topic. Okay, okay. Madiha, looking at your answer now. Reagent is NS3, Z, okay. Z, okay, and the product is 3 double bond N. Yeah, very good, very good, Madiha. Guys, you have to write the reagent's name also, okay, and then we will write the product name also. So please leave spaces, okay, to write the product's name. We have not written the product's name, but we will write it. Iram, you have not sent the answer. Iram, what happened? Iram, am I audible? Fine. Madiha, looking at your answer. Yes, correct, Madiha, very good. 7th one, double bond N R. Yeah, very good.
इरम लगता है क्लास में नहीं है आप। हाँ इरम, इरम फहद, आपको समझ में आ रहा है? आपने आंसर्स नहीं भेजे हैं फहद? ओके, चलिए फाइन गाइस, आई विल राइट द आंसर्स नाउ। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए। First of all, I'm writing the Z. Here the Z is hydrogen. The product will be carbon, whatever double bond, nitrogen, and then you will have H. Here the Z is OH. So here we'll have carbon, double bond N as it is, and then we'll have OH. Here again, the Z is complete NH2, right? So we will have carbon, double bond N as it is, and then NH2 will be the Z. For hydrogen, what is going to happen? This whole thing will be the Z. Okay, so rather than benzene ring, just to save space, I will write NH bonded to pH. Okay, NH bonded to pH. So here we'll have carbon double bond N, which is further bonded to NH, and then the benzene ring pH. Okay, in this case, the Z is going to be NH. NO2 and NO2. Okay, here it is going to be carbon double bond nitrogen, singly bonded with NH, and then benzene with NO2 and NO2. Fine. Then we have semi-carbazide. Now please see here, guys, there is a question in NCERT and it has been asked many times in the board examination. If you see here, we have this NH2 as well as this NH2. Now both the nitrogen atom, please see, don't write anything. Okay, if you're writing, please stop. Both these nitrogen atom will have lone pair electron. So both these nitrogens which are having lone pair electrons should be able to attack on the carbonyl carbon, but only this one does. This does not attack on the carbonyl carbon. Right. So the answer for that is, I will write the answer in writing also, but the answer is this particular lone pair of CONH2 of the amide group. It is in resonance with the oxygen atom like this. So this one is delocalized. It is not localized at one place, but this one is localized at one place. Okay, that is why this one attacks, not the other one. So the Z in this case will be NH bonded to C double bond O bonded to NH2. So the product will be carbon doubly bonded with nitrogen, singly bonded with NH. Then you will have C double bond O and the NH2 as it is. In the case of amine, it is going to be something like this. You'll have the R group, carbon double bond N, which is then bonded to R group, any alkyl group, any alkyl group. So till here, everything is clear. Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. देख लीजिए सबको एक बार। ठीक है, now we are going to write the names of these particular products. ठीक है, चलिए यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर देते हैं. First of all, we have this product. This is known as imine. ठीक है, टाइप कर देते हैं, ज्यादा साफ रहता है ना नाम.
So this is what this is imine, or it ऐसे इसको लिखिएगा imine or SCHIFF apostrophe F skiffs base. ठीक है, skiffs base भी आपके सिलेबस में है, in the sense that you have to know what is skiffs base. Okay, skiffs base ये या तो आप इसको अमीन बोल सकते हैं, imine बोल सकते हैं, और you can call it substituted imine. Okay, it's better substituted. If they ask what is skiffs base, you will call that it is substituted imine. Imine जो originally होता है, imine is when you react it with ammonia. जब R की जगह, in place of R, if you have hydrogen, it is imine. When we have semi-carbazide is here, right? Semi-carbazide. अब इन सब का नाम बहुत आसान है. Semi-carbazide है तो हो जाएगा semi-carbazone. Semi-carbazone. Here we have 2-4 dinitrophenyl hydrazine. So this will become 2,4 dinitrophenyl hydrazone. This will become phenyl hydrazone. Now, what is this? Hydrazine. Hydrazine will become hydrazone. This will be oxime. Okay, but if it is made with aldehyde, it will be aldoxime. If it is made with ketone, it will be ketoxime. Okay, but in general, it will be oxime. This is imine. Write the names, everyone. ठीक है, अब ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना, ये भले ही जितना भी बड़ा हो जाए, the products and all, it is very nice. Okay, I mean nice in the sense it is very easy. Done everyone? Yes or no? Please tell me. All of you done? हाँ जी बताएं. All of you done? Yes or no? ठीक है. अब सुनिए, आप लोग का काम ये रहेगा. Where is टाइम तो हो गया है, and I think इसमें 2 क्लासेस लग जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. तो आज आप लोग तो टेस्ट मत ही दीजिए. ठीक है. Just wanted to check. चलिए वो हम बता देंगे, आप लोग टेस्ट दे ही दीजिएगा, ठीक है ना, जो कि पूछा गया है उसके बारे में हम थोड़ा बता देंगे आपको, ठीक है. चलिए, बिफोर दैट write a few notes here, write a few remarks or note. First point is regarding 2,4-DNP. 2,4 dinitrophenyl hydrazine on reaction with aldehyde or ketone gives, depending on the aldehyde and the ketone, it will give either yellow, orange, or red PPT, that is red solids. Okay, therefore it is used for the detection of aldehyde or ketone.
What does it mean? It means that if I have a substance A and on reacting with 2,4-DNP, 2,4-DNP, and it is also known as 2,4-DNP test. So if we do 2,4-DNP test and I get either yellow or orange or red color substance, then this A structure can either be aldehyde or it can be a ketone. Okay, or it can be a ketone. So only aldehyde and ketones they give 2,4-DNP test. Is this clear? Yes or no? Please tell me. And take it. Next point, please see. This is now regarding the semi-carbazide. So in semi-carbazide, we'll make the structure. First of all, please try to understand NH2 bonded with NH. Sorry. Bonded with NH, bonded with carbon, doubly bonded with oxygen, and then you have NH2. Now here, if you see, this nitrogen atom is also having a lone pair. This nitrogen atom is also having a lone pair. So this nitrogen atom, it does not react. Due to delocalization of lone pair. Delocalization of lone pair does not react due to delocalization of lone pair and resonance. Okay. But what about this one? This does react. Sir, can you scroll? Just a second. This NH2 reacts as the lone pair is localized. It is in one place only. हाँ जी, सबका हो गया तो बताइएगा। Done, everyone? Can I move on? Yes. Yeah. Now, else here now. Okay. Before moving on to any other reaction, I will slightly discuss the reactivity of. This is important. Okay. Many times questions have been asked from this particular part. It's very important. छोटा सा सेक्शन है लेकिन बिल्कुल मिस नहीं करने वाले सेक्शन है। अभी इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए क्या हो रहा है एंड यू विल बी लाइक उसको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान सुनिए। इफ आई कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो क्या बात हो रही है? बात हो रही है reactivity of aldehyde versus ketone towards nucleophilic addition reaction. Towards nucleophilic addition reaction. Okay, now let us see and compare two things here. First of all, I will take RCHO, that means carbon, double bond O and hydrogen, and then I will take R, doubly bonded with carbon atom and another R. So here we have aldehyde
Here we have. First of all, let us talk about, see, we have a nucleophile which is going to attack, right? So nucleophile ko bhi hum bana lete hain. Here we have nucleophile. This nucleophile, it will attack, or it wants to attack this carbon here, or it will want to attack this carbon, right? Now, nucleophile, since it is negatively charged, it will attack on that carbon. It will attack on that carbon which is having more delta positive charge, not good color, which is having more delta positive charge. If it is having more delta positive charge, or this one is having more delta positive charge, whatever is having more positive delta positive charge, and more delta positive charge, it is going to be attacked by the nucleophile. Now, if I compare the delta positive charge, the electron poorness, if carbon, whatever carbon is more electron poor, nucleophile will attack there. If I compare the electron poorness, then you will see that this carbon atom of the aldehyde, it is getting electrons from one R group, and this is going to get the electron from two R groups. So that is why we can say that here we have less number of plus I group makes carbonyl carbon more electron poor. In this case, I can write more number of plus I group makes carbonyl carbon less electron poor. Another thing. Now, nucleophile, if I look at the electron poorness, nucleophile see, oh my god, aldehyde is so poor, it is not getting any electron from the alkyl groups. Ketone has two alkyl groups, so why I will go there? I will give the electrons to the carbonyl carbon of aldehyde, not of ketone. Then let us suppose कि कुछ दया आ गई nucleophile को, है ना, वो ketone के पास चला भी गया. See, he went to ketone, and what he is seeing, ketone के पास तो attitude है. कैसा attitude है? See guys, ketone is having alkyl group, big alkyl groups are surrounding the carbonyl carbon, है ना. मतलब nucleophile मदद करने जा रहा है. nucleophile वो मदद करने जा रहा है electrons लेके, लेकिन उसके बाहर बॉडीगार्ड खड़े हुए, बड़े alkyl group खड़े हुए. So it is more sterically hindered. That is why nucleophile cannot approach the carbonyl carbon. Steric hindrance is high. Therefore, attack is slow. Here, steric hindrance is low. Therefore, attack is slow का क्या हो जाएगा? फास्ट. ठीक है. अब यहां से हम एक कंक्लूजन डाल दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ही लागू हो जाएगा. ध्यान से देखिए जरा. रेट ऑफ nucleophilic addition reaction is inversely proportional to the number of alkyl group on C double bond. ठीक है, जितने कम alkyl group रहेंगे उतना फास्ट होगा रिएक्शन. अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका फास्ट होगा? ऑब्वियसली एल्डिहाइड का फास्ट होगा, उसके बाद ही कीटोन पे नंबर आएगा.
Done, guys? Yes or no? Please tell me. All of you wrote this down. Understood this? Yes or no? हाँ या ना बताएं. इरम, मदीहा, इधर तो क्लास में. मदीहा, तारीफ, रबा, शाहिद and शावेज. Yes. Yes, sir. Now एक छोटी सी चीज आप लिख लीजिए जरा. Second reaction that we are going to do is addition of HCN. Okay, so please write. What does it forms? It forms cyanohydrin. क्या होता है cyanohydrin? Please see here. Please see here, guys. First of all, we will take the HCN is what? Hydrogen cyanide. Okay, hydrogen cyanide. So first of all, we will have HCN, and we will react this with OH negative. When I react this with OH negative, I will get H2O, and I will get Cn negative. Now, since Cn negative is strong, Iram, if you are in class, why are you not replying to anything? You have not even sent the answers to the previous questions. See here, Cn negative, it is what it is, more nucleophilic. Okay, so what will happen? It will attack on the carbonyl carbon. Obviously, by now you know that carbon will attack on the carbon carbon because carbon bond is stronger. It will form whatever two bonds are here, that will be as it is, singly bonded to oxygen atom, and here you will have the Cn. Okay, this oxygen will get a negative charge because this bond will break like this. After that, you add H plus and you will get carbon. Whatever two bond it was having, it will have it Cn, and you will get OH. So the carbonyl carbon, it is getting Cn and OH. Okay, so for example, if you have CH3CHO reacting with HCN in the presence of NaOH or some base, then what is going to happen? You identify the carbon which is the carbonyl carbon. Identify the carbonyl carbon and you write it like this: CH3 bonded to carbon. So this carbon already had a hydrogen, so you write that hydrogen. Then OH and Cn. Similarly, if you have something like this, double bond O, HCN, NaOH, identify the carbonyl carbon, the two bonds as it is, the oxygen will become OH, and then you will get Cn. So please write this down. Let me know once you're done. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. And जी सबने लिख लिया? Tell me, guys, if you're done, then I have to make an announcement. Yes, sir. Done. Sound ठीक है. अच्छा चलो लिख के. Yes, sir, done, sir. ठीक है. चलो. Listen to this announcement very carefully. All of you got the syllabus for the revision test? Yes or no? Please tell me. Sir, I didn't get. So you will ask your father, okay? आपको टेक्स्ट आता है, वो मैसेज आता है शावेज लर्निंग से क्लासेस का? किस किस को नहीं मिला? प्लीज रेज योर हैंड ना. प्लीज रेज योर हैंड if you have not got the schedule.
Okay, sir, you're saying from Learnivio. हाँ, learning. Tarif you have not got. Who else? Yes, sir. Madiha, all of you have got it? Yes or no? Sir, I didn't get. तो raise your hand ना if you have not got, guys. Please raise your hand. Those who have not got the test series का syllabus. किसी को नहीं मिला है क्या? रबा, शाहिद, you got it? शाहिद नहीं है क्या क्लास में? So you got it, okay. So I have to send it to Tarif. Who else? Shawiz. Keep your hand raised, guys, okay? हम आप लोग को मैसेज कर रहे हैं. शाविज हो गए, और कौन है? फतीहा. रबा, you got it? Yes or no? रबा? No, sir. तो रेज योर हैंड ना यार, क्या आप सबसे पूछते रहे हैं हम? सिंपल सी चीजें आप लोग बिल्कुल एकदम ओबे ही नहीं करते. नहीं आता, हाथ रेस्ट करने नहीं आता क्या आपको? रबा, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू. Function. अच्छा, इरम, व्हाट अबाउट यू? गॉट इट? यस और नो? इरम तो रिप्लाई नहीं कर रही. इरम का ही नहीं लगता क्या? Yes, sir, I got it. गॉट इट, ओके. चलो, फाइन, आई हैव सेंट इट टू यू गाइस. ठीक है, अब ऑल ऑफ यू प्लीज लोअर योर हैंड. ऑल ऑफ यू प्लीज लोअर योर हैंड. ठीक है, सबको हमने भेज दिया है, देख लीजिएगा. तो हम अभी बता ही देंगे, देख लीजिएगा आराम से ना. फिजिक्स और बायो का देख लीजिएगा, बाद में कुछ मत देखिए. अभी पीडीएफ नहीं देखना, किसी को नहीं खोलना पीडीएफ. ठीक है, लिसन हियर गाइस, लिसन. ऑल ऑफ यू लोअर योर हैंड, ओके? लोअर योर हैंड. अच्छा, रेज योर हैंड अगर आपके स्कूल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हाफ ईयरली के सिलेबस में है या फिर पढ़ाया जा चुका है. इफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमने ले लिया ना इसमें, और इसमें तो सारा ही हो गया. सॉल्यूशन हायरार्की, कार्बोनिल कंपाउंड्स चल रहा है बस. ओके, raise your hand if you have done electrochemistry with me. And wait, sorry, I will repeat my question. Raise your hand if you have not done electrochemistry with me. Raise your hand if you have not done electrochemistry with me. Rabah has not done electrochemistry with me. Who else? ठीक है. अच्छा, Rabah, can you please turn your mic on? Yes, sir. Rabah, is electrochemistry coming? Is electrochemistry coming in your syllabus, in your half yearly exam? Sir, my half yearly was done before vacations, so electrochemistry is coming in my unit test, which is Unit test कब है आपका? September 3rd or 4th week, sir. Third or Because fourth in week. उसमें और- second week we have half yearly re-exam. अच्छा, और क्या क्या आ रहा है आप लोगों को बताइए जरा. यूनिट टेस्ट में आप, यू आर नॉट Alcohol electrochemistry. This one is coming. और एल्डिहाइड वाला चैप्टर. ओके, और व्हाट एल्स? Sir, क्या? can I mute? हाँ, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपको? जी बताएं. यस रबा. Electrochemistry and one more chapter. I guess it's not done in the school. That is coming for unit test. And समझ नहीं है. all Chapter नाम बताइए. alcohols and all the 4 chapters, other chapters are coming for half yearly, the exam, which is in September. क्या? वेट कर रहे थे आराम से, तो आवाज आपकी सही से नहीं आ रही ना. ठीक है, तो छोटा छोटा जवाब दीजिएगा. आर यू गिविंग द हाफ ईयरली री एग्जाम? Yes, और नो? यू आर गिविंग हाफ ईयरली री एग्जाम. yes, sir. हाफ ईयरली, ठीक है. हाफ ईयरली में क्या क्या आ रहा है बताइए. सबको देना है क्या? Yes, sir. ओ, सबको Half देना yearly है. में solutions, D and F block. वेट. And ये शाविज और, मैंने एग्जाम्स दिए नहीं थे बिकॉज मेरे मैचेस थे बास्केटबॉल के. ओ अच्छा, याद आया. ठीक है, शाविज आपको भी देना है. Yes, कौन sir. से स्कूल में? Midterm is there. अच्छा, आपका मिड टर्म. रबा, आपका कौन सा स्कूल है? IASR. और इनका कौन सा है? शाविज आपको कौन सा है? ISDs. IASR से कोई और है? Anyone else?
इज एनीवन फ्रॉम ISR? कोई नहीं है। चलिए हाँ बोलिए शावेज। IISD। अरे डी का बाद में करेंगे, ISR ले लेते हैं ना पहले। ठीक है, ISR का हाफ ईयरली सिलेबस बताइए रबा। सोल्यूशन Solution, haloalkenes, haloarenes, ओके, और बस खत्म। DNF ब्लॉक, alcohol, phenol. अल्कोहल, ओके, और Only 4 chapters for half year. ओनली 4 चैप्टर। ठीक है, तो आपको चाहिए रिवीजन, आपको DNF ब्लॉक पढ़ना होगा, है ना? एक्स्ट्रा क्लास चाहिए DNF ब्लॉक की। Yes, sir. ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं D&F के लिए रबा को चाहिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है ना? अब ठीक है, और बताइए और किसको चाहिए DNF ब्लॉक के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस? एक्स्ट्रा क्लास फॉर DNF ब्लॉक, एनीवन एल्स? Sir, I want. आपको चाहिए, शावेज को चाहिए, और किसको चाहिए बताइए? शाहिद को चाहिए, और किसको चाहिए बताइए? एनीवन एल्स? DNF ब्लॉक, DNF ब्लॉक, आ जाओ, आ जाओ, 5 का 3, 5 का 3, जल्दी बताओ भाई। और किसको चाहिए DNF ब्लॉक? किसी को नहीं चाहिए? लॉक कर दें? अरे बोलो भाई, लॉक कर दें? ये हमको असल में भेजना है टीम को ना, फिर वो शेड्यूल करेंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बताइए। चलिए ठीक है, इन 12C1, इन 12C1 revision for D and F block, इनको चाहिए रबा, शाहिद एंड शावेज, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, चलिए और बताइए, और बताइए कोई चैप्टर बताइए जो हम लोगों ने नहीं किया, जिसका रिवीजन चाहिए आप लोग को उसमें से, ठीक है? Yes, sir. आपका तो हाँ, तारीफ आप बताएं, तारीफ बताइए। So in my school, we are not having electrochemistry, chemical kinetics and aldehydes in half year. ठीक है, क्या है आपके सिलेबस में वो बता दीजिए तारीफ आप। Solutions, हम्म, alcohol, halorine, अल्कोहल, biomolecules. Yes, sir. बायोमोलिक्यूल्स, ओके, बायोमोलिक्यूल्स और Amines. अमीन्स। तो मतलब हम दोनों ने 3 चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर आपका नहीं किया हुआ, राइट? Yes, sir. बायोमोलिक्यूल्स एंड अमीन्स, ठीक। और किसी को चाहिए बायोमोलिक्यूल्स एंड अमीन्स? और किसी को नहीं चाहिए? और बायोमोलिक्यूल्स के लिए किसी को चाहिए? बायोमोलिक्यूल्स, ओनली बायोमोलिक्यूल्स, हाँ जी, किसी को चाहिए? अच्छा चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, ये ऐसे आप लोग से पूछना मेरे लिए मतलब टाइम की बर्बादी है। हम पोल डाल देंगे, ठीक है? हम पोल डाल देंगे, और देखिए ये ध्यान रखिए, आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस विल नॉट हैव एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर, आपका सोल्यूशन का एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा, अल्कोहल सॉरी हैलो एल्कीन का एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा, ठीक है? अल्कोहल का एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा, ठीक है? और एल्डिहाइड अगर आपका बहुत नजदीक है तब एल्डिहाइड का भी हम ले सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन, हैलो एल्कीन और अल्कोहल, इसको तो हम रखेंगे ही नहीं ऑप्शंस में, ठीक है ना? बिकॉज हाफ ईयरली आप लोग सारे लोग बहुत पहले से हैं, हाफ ईयरली में आप लोग थे, हाफ ईयरली में वी हैव डन सोल्यूशन एंड हैलो एल्कीन्स आल्सो, ठीक है ना? दोनों चीज हमने कराया हुआ है, इसके लिए प्लीज आप लोग एक्स्ट्रा क्लास ना मांगो, ठीक है? और जिन लोगों को चाहिए अगर रिकॉर्डिंग्स वगैरह, तो वो तो अवेलेबल है ही, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं मिलेगा, ठीक है? दूसरी चीज ध्यान दीजिए, दूसरी चीज, केमिस्ट्री के लिए आपके पास जो वीक 1 का सिलेबस है, मतलब हम आपको क्या ही बताएं, 10 के 10 चैप्टर आ रहे हैं भाई, कंपेयर लाइक हर एक बच्चे का ना, इरम का ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है, तो सभी मतलब ऑल 10 चैप्टर्स आर कमिंग इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अगर हमारी बात करें तो जैसे आपको दिखाई देते हैं,
फॉर्म फॉर हाफ ईयरली प्रिपरेशन हमने भराया था ना, रिस्पॉन्सेज। आपकी इतनी हैरानी होगी जानकर, तो बताइए कैसे आदमी इसको मैनेज करे, बताइए। ठीक है, ये देखिए सारे चैप्टर सारे कहीं ना कहीं ऐसे 77% बच्चों का क्या आ रहा है सोल्यूशन, 33% बच्चों का आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 50 मोर देन 50% बच्चों का काइनेटिक्स आ रहा है, हालो एल्किन हालोरीन आ रहा है वही 77% बच्चों का, अल्कोहल आ रहा है 83% बच्चों का, कुछ ना कुछ परसेंटेज 3 बच्चे 5 बच्चे इस तरह से हैं इनका हर एक चैप्टर आ ही रहा है, ठीक है ना। इसमें तो मतलब आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या किस पे फोकस किया है, सोल्यूशन पे, हालो एल्केन पे और अल्कोहल पे। और ये क्यों किया है, बिकॉज लास्ट ईयर भी सेम डेटा था, बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल लास्ट ईयर का चार्ट बिल्कुल ऐसे ही था, दिखाएं आपको लास्ट ईयर का चार्ट, ये पहली बार नहीं है, ये आपके यहाँ के जो लोग हैं ना स्कूल, वो बहुत पहले से लोगों को परेशान करते हैं। लास्ट ईयर ज्यादा बैचेस थे मेरे पास, रिस्पॉन्सेज लिया ठीक है, ये देखिए बिल्कुल वैसा है कि नहीं बताइए। हाँ, दिस फ्रॉम लास्ट ईयर, भाई सेम हाफ है ना, बिल्कुल वैसा ही। इसी वजह से हमने मतलब ध्यान आ गया था हमको कि हाफ ईयरली में भी ये झंझट हो रही थी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया था, हाँ इसमें भी देखिए यही 3 चैप्टर्स, सबसे ज्यादा इन्हीं 3 चैप्टर्स के ऊपर फोकस था। इस वजह से सोल्यूशन और हालोएल्केन हालोरीन हमने पढ़ा ही दिया, हमको ये लग रहा था कि हालोएल्केन हालोरीन मोस्ट ऑफ द बच्चों का आ ही रहा होगा क्योंकि लास्ट ईयर भी आया, ठीक है। और उसके अलावा मतलब बाकी कुछ चीजें हमने सजेस्ट की थी टीम में कि एटलीस्ट केमिस्ट्री के लिए स्कूल वाइज बना दीजिए, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं सकता कि स्कूल वाइज बैचेस हो, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, इफ यू विल सी द शेड्यूल नाउ, शेड्यूल पे आ जाते हैं जरा, ठीक है ना। हम अपने केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री के वीक 1 में यू हैव सोल्यूशन और इलेक्ट्रो, ठीक है। सोल्यूशन विल बी मिक्स, दैट मींस इसमें एमसीक्यू होगा, इसमें यू विल हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट, इसमें यू विल हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, इसमें यू विल हैव, लेकिन इसमें कंप्लीट मिक्स होगा। अब देखिए हम, अगर आप देखिएगा इन द पेपर यू हैव 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स, राइट, लेकिन जिसका इलेक्ट्रो नहीं आ रहा है और सोल्यूशन आ रहा है, तो आई मीन तो वो टेस्ट तो देगा ही नहीं, वो बोलेगा आधा तो मेरा आ नहीं रहा है, आधा का आ रहा है। व्हाट आई विल डू, सॉल्यूशंस हैव द मैक्सिमम पीपल, है सारे लोगों का सॉल्यूशन आ रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग सॉल्यूशन, उसमें हम सारी चीजों को डाल देंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रो के लिए अलग पेपर बनाएंगे, दैट विल बी ओनली एमसीक्यू, ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस, यस और नो प्लीज टेल मी, हाँ या ना बताएं, सबको क्लियर है ये चीज। अब सुनिए, जिनका दोनों आ रहा है तो वो सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों का ही पेपर देंगे अलग अलग से, सोल्यूशन का देंगे फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देंगे। वीक 2 में सेम चीज हमने वो किया है, वीक 2 में देखिएगा तो यू हैव केमिकल काइनेटिक्स एंड हैलो एल्केन, सो हैलो एल्केन विल बी मिक्स, मतलब सारी चीजें होंगी, और केमिकल काइनेटिक्स में यू विल हैव ओनली एमसी। अब देखिए हम वजह है देने की, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाएगा चेक करने के लिए, है ना, वो सीधी हम उस 6 पेपर बनाना फिर उसको चेक करना, मतलब अगर आपको हमने पेपर बना के दे दिया, जैसे अभी आप देखते हैं बड़ा टाइम लग जाता है, देयर इज अ ह्यूज लैग बिटवीन व्हेन यू गिव द पेपर और फिर जब आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो वो चीज ना हो, इस वजह से आप लोग टेस्ट दीजिए और इंशाल्लाह कम से कम जो एमसीक्यू है उसका आंसर आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपने हालोल्किन का दिया तो उसमें आपको 2-3 दिन का समय लग सकता है, ठीक है। हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे इंशाल्लाह इस बार। वीक 3 में क्या होगा, वीक 3 में अल्कोहल, फेनॉल और ईथर्स, इसका होगा मिक्स, और एल्डिहाइड वगैरह का होगा ओनली एमसीक्यू। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना ये बता दें, और हो सके तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, कि क्या मिक्स आ रहा है और क्या आपके पास एमसीक्यू आ रहा है। तो मिक्स में हमारे पास 3 चैप्टर है, मिक्स में, मिक्स मतलब जो प्योर होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें एमसीक्यू नहीं होंगे, वो क्या क्या आ रहा है मिक्स में, यू हैव सोल्यूशन,
एलोएल्कीन और अल्कोहल वाला चैप्टर। और ओनली एमसीक्यू में क्या आ रहा है, ओनली एमसीक्यू में आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रो, और आपके पास आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स, और आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को ठीक लगा मेरा ये आइडिया? बताइए, ठीक है इस तरह से करना आप लोगों के लिए? हाँ या ना? सबका सब कुछ टेस्ट भी हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मिला के लेते, जो तो जिनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा वो क्यों पेपर देते? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ या ना? इरम, मदिया, तारीफ, रबा, ऑल ऑफ यू गाइस, Yes, sir. है ना? इस वजह से हमने क्या किया, ज्यादा लोगों का सोल्यूशन है, कम लोग, अब जिन लोगों का इलेक्ट्रो है, काइनेटिक्स है और एल्डिहाइड, आई एम रियली सॉरी, है ना? लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि देखिए बोर्ड में तो सारे ही चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना? तो बोर्ड पे आप ज्यादा फोकस करें। ऐसा आप लोग बिल्कुल ये नहीं रखें कि बोर्ड्स में कैसे होगा। आप बस, हम तो बोलेंगे लर्निवियो के साथ चलते रहिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में अगर हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा। आपकी प्री बोर्ड्स हो जाए चाहे बोर्ड्स हो जाए, आपको इंशाल्लाह अच्छे ही नंबर आए, ठीक है ना? बस जो कराया जा रहा है उस पर आप फोकस कीजिए, ज्यादा बैकलॉग मत आने दीजिए। एनसीईआरटी कंप्लीट करते रहिए, असाइनमेंट्स। दूसरी चीज हम बोलेंगे, नोट्स मेरे जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, खास तौर से हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ भी, देखिए न्यूमेरिकल कराने की बात आएगी जब फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें न्यूमेरिकल लिमिटेड नहीं है, लिमिट बहुत अनेक न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लीज ध्यान रखिएगा, नोट्स के बाहर आ ही नहीं सकता है, वो पूछते ही नहीं है सीबीएसई, ठीक है? सीबीएसई आपको पूछेगा ही नहीं नोट्स के बाहर, ये बिल्कुल आप इत्मीनान रखिए इस बात से, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेजर पोर्शन है। अब जहां तक रही न्यूमेरिकल्स की बात, वो हम आपको जो भी पीवाईक्यूज हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारा कुछ हम प्रैक्टिस करा देंगे। अगर आप पुराने क्लास में देखिएगा ना, आई हैड क्लासेस टिल, अगर आप देखिए, आई थिंक एनईबी में हमने सारे कुछ रखा था। एनईबी का आ गया काइनेटिक्स, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 19 जनवरी को क्या हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? रिवीजन हो रहा है, ठीक है? तो देखिए सिर्फ पीवाईक्यूज, ठीक है? और कहाँ गया भाई? हाँ, ये तो ठीक है। तो आप उसकी चिंता ना करें, अगर जिन लोगों को न्यूमेरिकल्स में डर लगता है वो सारी चीजें करा दी जाएगी, और इस बार तो इंशाल्लाह सिलेबस और जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? आपको ये दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम अल्कोहल 1 2 3 4 अल्कोहल में जाएं, तो अल्कोहल चैप्टर खत्म हुआ था कब? 6 सितंबर में, काफी लेट। और आपका ये कार्बोनिल खत्म हुआ है, समझ लीजिए सितंबर, नवंबर, दिसंबर, है ना? तीनों लगभग यहाँ पे महीने आ चुके थे कार्बोनिल पे, लेकिन वो टाइम आपके पास नहीं रहने वाला, बिकॉज हम लोग कार्बोनिल में ऑलरेडी है, ठीक है? 12C3 में तो काफी आगे, 12C1 में देखिए 29 अगस्त में ही हम लोग कार्बोनिल में, तो सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन के लिए बहुत टाइम, ठीक है? उन चीजों से आप बोर्ड्स के लिए कम से कम आप इत्मीनान, आप फेयरली में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए, तो अपने आप को भी थोड़ा बख्श दीजिए और हमको भी थोड़ा बख्श दीजिए, ठीक है ना? मेरे लिए बड़ा ही दिक्कत का काम है इसको मैनेज करना। ये जो मिडिल ईस्ट के टीचर ने फैला रखा है ना रायता, इसको हैंडल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, और खासतौर से केमिस्ट्री में ही होता है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? चलिए, ऑल ऑफ यू आई होप हैव गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से आपके टेस्ट होंगे, ठीक है? चलिए, नाउ यू कैन गो टू द असेसमेंट, आप असेसमेंट दीजिए आराम से, और फ्राइडे आपका सबसे पहला टेस्ट होगा, है ना? आई थिंक यू हैव द डेट आल्सो, 1 सितंबर फ्राइडे है, 1 सितंबर, दैट इज फ्राइडे, वहां पे टेस्ट होगा। एक और चीज बस हम आपको बता देते हैं कि आई विल बी नॉट टेकिंग द क्लास, दैट विल बी ऑन